Hello and welcome to the new video on service marketing mix, that is 7 P's। हमारी और आपकी पूरी डेली लाइफ कनेक्टेड है या सराउंडेड है सर्विसेज से। सुबह से लेकर रात तक हम जाने अनजाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बहुत सारी सर्विसेज यूज करते हैं टू मेक आवर वर्क, टू मेक आवर लाइफ इजी, सिंपल एंड फास्ट। सुबह उठते ही आप जब मैसेज या नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, इसका मतलब आप सर्विस यूज कर रहे हैं। वो सर्विस नेटवर्क कंपनी का हो सकता है, फॉर दैट मे बी कॉलिंग सर्विस, दैट मे बी डेटा सर्विस और नेटवर्क सर्विस। और सुबह आप घर से स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए जब आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेते हैं, वो आप कैब की सर्विस लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओला, उबर और रेलवे और सम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बस। या दोपहर की लंच के लिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज करते हैं फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी, इट मे बी जोमेटो, इट मे बी स्विगी। और आप शाम को जब इंटरटेनमेंट यूज करते हैं ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म कॉल नेटफ्लिक्स, Prime, Amazon, or Hotstar. So these are the just few examples that we are taking all these services to make our life easy, simple and fast. क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सर्विसेज हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देके जाती है, हमें खुश करके जाती है, हमें सेटिस्फाई करके जाती है और उनका एक अच्छा मेमोरी हमारे दिमाग में होता है, और कुछ सर्विसेज हमें उतनी पसंद नहीं आती। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड what makes this service different and unique. So today we will learn the service marketing mix, and we will try to understand what are the unique service marketing mix which makes the service unique, interesting and unforgettable experiences to the customers. So we will start this service marketing mix. So first we will learn the concept of service marketing mix. The service marketing mix consists of set of tactics or tools that every company, every service based company, they use to promote their services in order to attract the customers, to create awareness among the customer and encourage the customer so that they are going to buy the services. Now this service marketing concept, this marketing mix concept was provided by the McAfee in the year 1960, and it is known as 4 P's of marketing or 4 P's of marketing mix, that is product, price, place and promotion. Now later in the year 1981, Booms and Brittner, they have added 3 more P's based on the service related businesses, because the characteristics of service, the feature of service, service का feature product के feature से काफी अलग होता है, that is intangibility, inseparability and variability. So variable होता है नेचर में और बहुत सारे characteristics प्रोडक्ट से अलग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 3 और P's ऐड किए इन द प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, that is process, physical evidence and people. Now we and this all 7 P's altogether, it is called as a service marketing mix. So now we will understand each element of marketing mix in detail, and we will try to understand with the real and daily life examples that we are using on a daily and regular basis. Now, the first element of service marketing is what? Product. What do you mean by product? Product in service marketing, the product refers what kind of services that you are offering to the customers. So you have to in product or in tangible goods related business where you are offering the physical product where the customer can touch, see, feel, and experience. Even he can inspect the particular product before the purchase. But this is not the case in the service. In service, service are intangible in nature, so the customer cannot touch, the customer cannot feel, the customer cannot inspect. So you have to give certain value to the customer. So your particular service must be having the quality and capability to solve the problem of customer. Your service should be capable to give the extra benefits to the customer, and your customer should be feel happy and satisfied. So the product refers to what? Core service and supplementary benefit, the main service. For example, say for example, telecom industry, in the telecom industry, say for Reliance Jio, they offer the core service like network and data, right, data service, and other supplementary benefit they are giving like Jio Cinema or Jio Savan, that benefit you can take. For example, in the tourism industry, say for example IRCT, the main core service of IRCT is ticket booking, but supplementary benefit they can give the catering service. They are extra benefit that they are giving, or some package of tourism. Then in banking, HDFC, they are giving the core service called your banking account, your financial services, and supplementary benefits that may be a credit card, that may be a loan, that may be an investment banking, that may be an internet banking, mobile banking. So these are the 2 elements. But in the product, there are the layers of the product in the service marketing. Different layers are there to develop the product in the service marketing. The first one is what? Core service. Core service मतलब fundamental service, the main service जो आप deliver कर रहे हैं.
दैट इज से फॉर एग्जांपल होटल का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो होटल का मेन कोर सर्विस है आपको अकोमोडेशन देना, आपको रेस्ट देना। अगर आप राइड सर्विस लेते हैं, से फॉर एग्जांपल ओला और उबर लेते हैं, तो उनका मेन और उनका कोर सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन, आपको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन बेसिक सर्विस मतलब ये ऐसा सर्विस है जो इसेंशियल है आपके कोर सर्विस को ऑपरेट करने के लिए। अगर ये बेसिक सर्विस नहीं होगा तो कोर सर्विस कोई एक्सेप्ट नहीं करे। एग्जांपल से फॉर अगेन से टेक द एग्जांपल ऑफ होटल। जब आप होटल में कोई रूम लेते हैं फॉर अकोमोडेशन, तो आप ये चेक करते हैं तो क्लीन होना चाहिए, कंफर्टेबल सीट्स बेड होने चाहिए एंड मील्स होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक सर्विस। अगर ये बराबर है देन द कोर सर्विस विल बी टेकन बाय द कस्टमर्स। एग्जांपल राइड सर्विस, अगर आप ओला उबर लेते हैं तो आप ये इंश्योर करते हैं कि वो कैब अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बुकिंग, और यू शुड हैव द ट्रैकिंग फैसिलिटीज। देन एक्सपेक्टेड सर्विस, ये ऐसी सर्विस है जो कस्टमर लेने के बाद वो एज्यूम करता है, मान के चलता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि ये मिनिमम ये चीजें, ये सर्विस मिलेगी। दैट इज से फॉर एग्जांपल होटल। अगर आप होटल लेते हैं फॉर अकोमोडेशन तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस होटल में फ्री वाईफाई अवेलेबिलिटी होगी, हॉट वाटर मिलेगा, रूम सर्विस आपको मिलेगी। अगर आप राइड ले रहे हैं ओला उबर से, तो आप ये मान के चलते हैं कि वो कैब क्लीन होगी, नीट होगा, वो कस्टमर वो पर्टिकुलर ड्राइवर काफी अच्छा होगा, एंड यू विल हैव अ सेफ राइड। Then augmented service means that is extra service beyond the expectation of customer। कस्टमर से उम्मीद से ज्यादा आपने जो सर्विस दी है उसको हम अगुमेंटेड सर्विस बोलते हैं। एग्जांपल, आप होटल में अकोमोडेशन की सर्विस ले रहे हैं, तो उन्होंने आपको एक वेलकम किट दिया है, स्विमिंग फैसिलिटी दी है, स्पा फैसिलिटी दी है, एक्स्ट्रा सर्विस बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। राइट सर्विस अगर आपने ओला उबर लिया है, उन्होंने आपको म्यूजिक का सेपरेट पर्सनल म्यूजिक ऑप्शन दिया, आपने उन्होंने दिया, या वाटर बॉटल की फैसिलिटी आपको दी है, दैट इज एन एक्स्ट्रा सर्विस दैट इज गिवन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। देन पोटेंशियल सर्विस मतलब ऐसा सर्विस जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, जो फ्यूचर में आने वाला है, वो नया इनोवेशन हो सकता है, और ये सर्विस वो इसलिए देते हैं या दिखाते हैं या सैंपल्स देते हैं कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, कस्टमर को रिटेन कर सके, कस्टमर को रोक के रख सके। सो एग्जांपल इन होटल, ऑटोमेटेड चेक इन्स और वर्चुअल रियलिटी दैट यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ द रूम्स और डिजाइन रूम्स। और अगर आप राइड सर्विस लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड राइड पैकेज विल बी गिवन इफ यू आर अ रेगुलर कस्टमर। So this is what the first marketing mix called product. Then you have second, very important, that is what price. So price is what? Price is a monetary value that customer pay for taking the benefits of that particular service. So fixing the price or price fixation of service is quite challenging for the services. Service का price fix करना एक काफी difficult और complex होता है as compared to the product, because service are intangible. But there are many factors involved in deciding and fixing the price. That may be a cost of service, that may be a demand of service, that may be the competitor's price or pre-received values. So example, the factors are what? Cost of services। ये कुछ factors होते हैं जिसकी वजह से, जिसके ऊपर हम प्राइस फिक्स करते हैं सर्विस का। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस जैसे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस और मटेरियल, से फॉर एनी होटल और सम लग्जरी स्पा। देन प्री रिसीव वैल्यू, एग्जांपल नेटफ्लिक्स ऑफर सब्सक्रिप्शन, स्टैंडर्ड क्वालिटी, एचडी क्वालिटी और मल्टी यूजर एक्सेस। आप अगर उनका उनका वेरियस प्लान्स होता है कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे डिवाइस पे उनके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देन कंपटीशन, तो कभी कभी सर्विस की प्राइस को कंपटीशन के हिसाब से भी उनको ध्यान में रख के उनके प्राइस को अपडेट किया जाता है। एग्जांपल जियो एंड एयरटेल, दे आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, सो दे फोकस ऑन द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, एंड उसके हिसाब से वो अपना प्लान सेट करते हैं। देन डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, then example movie ticket, if you will book the movie ticket in the theater on the weekends or on the holiday, so they will charge a higher price for that particular ticket. Say for example a resort in Goa, they will charge high price in the season, in the season, and vice versa. Then service differentiation, so this is also one of the factor that some service provider, कुछ सर्विस प्रोवाइडर एक ज्यादा प्राइस लेते हैं, एक हाई प्राइस लेते हैं, और वो दिखाते हैं कि हमारा सर्विस दूसरे से काफी अच्छा है और काफी बेहतर है, काफी बेटर हम सर्विस देते हैं। दे चार्ज प्रीमियम प्राइस, दे चार्ज हायर प्राइस। से फॉर एग्जांपल ताज होटल, amazon prime, there are different pricing strategies are there। फ्लैट रेट प्राइसिंग, एग्जांपल अगर आप जिम का मेंबरशिप लेते हैं तो फिक्स रेट होता है, फिक्स मंथली मेंबरशिप होता है, फिक्स्ड क्वार्टरली मेंबरशिप, फिक्स्ड ईयरली मेंबरशिप।
देन यू हैव डायनेमिक प्राइस, द प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग। एग्जांपल, आपने अगर ओला उबर का एक्सपीरियंस लिया होगा, तो ओला उबर का रेट वो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। मॉर्निंग में कुछ अलग होगा, आफ्टरनून में कुछ अलग होगा, देन इवनिंग में कुछ अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द situation, depending upon the time. Same for airlines. If you will book the flight ticket, so they will charge you a higher price during the festive season. Then use based pricing, आप सबके मोबाइल में गूगल है, गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव में स्पेस होता है, वो स्पेस का वो प्राइस चार्ज करते हैं। अगर वो स्पेस आपने यूज कर लिया, देन यू हैव टू पे द एडिशनल प्राइस फॉर एडिशनल क्लाउड स्टोरेज। Then tiered pricing, example telecom industry, they offer different data plan. Different data plan, it may be a basic, it may be a standard, it may be a premium data plans they are offering. Then freemium model. Now this is one of the unique model in this modern day, that some company they offer some content, some features of their product and services at free, but later on they start charging the price. Example, Spotify. This is a music application. You can listen the music, but if you want to hear, if you want to enjoy the another or premium based music, you have to pay the price. Same for the OTT platform. Say for example, all OTT platform, it may be Amazon, it may be Amazon Prime, Netflix, or Hotstar. So you can watch the first video, the first episode at free of cost, and if you want to watch and if you want to consume the next episode, you have to pay the price, or you have to take the subscriptions. The present examples are Ola, Uber. They based on the demand-based pricing. Then telecom plans, they use bundle pricing because they have different pricing. For they charge bundle pricing. They charge one price for various services. In that they are giving calling services, SMS services, data plan, and lot many more. Then airlines, they depends on the booking timing and the availability of seats. And same for the gym plan. Next, the service marketing mix. Next element. The third one is place. Plays very important role in case of tangible product, where you can produce the goods and you can store and you can deliver the goods from one particular location. But this is not in the case of service marketing. Services are intangible, it is inseparable, and it is variable in nature. So plays play very important role. They focus on giving the accessibility to the customer. आसानी से कस्टमर को मिल जाना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, कस्टमर को उसको लेने में, वो सर्विस को लेने में, ऑफलाइन या ऑनलाइन लेने में कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दैट यू हैव टू डिसाइड द प्लेस फॉर डिलीवरिंग द पर्टिकुलर सर्विस। आप वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं फिजिकल स्टोर के थ्रू, या ऑनलाइन या रिमोट वो सर्विस आप दे सकते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड, और बोथ you have to decide that how you are targeting and how you can give your service to the customer. So your that place provides the convenience, place provide करता है सुविधा, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और कस्टमर आसानी से वो आपका सर्विस ले पाएगा। एंड देन इसमें there are the certain things that you need to consider, that the location of service का location क्या है, it may be physical or it may be online or both. Say for example healthcare, although hospitals they try to give you the services by opening the physical hospitals, a physical location. Example Amazon and Flipkart, they give you the online service because they want to target the pan India. वो पैन इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे गो ऑनलाइन। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आप किस चैनल से आप वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाउ यू विल सप्लाई योर सर्विस, हाउ यू विल प्रोवाइड योर सर्विस टू द कस्टमर, वो कौन सा चैनल, वो कौन सा मेथड आप यूज करने वाले। एग्जाम्पल इट मे बी अ डायरेक्ट सर्विस। एग्जाम्पल आर लॉयर, if you want to take a legal service from the lawyer, so you have to reach to the office of that particular lawyer. Example Domino's, they follow the franchisee model. So then digital channel like Zomato and Swiggy, they use online platform to deliver their सर्विस। दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देन सर्विस एक्सेसिबिलिटी, आपका सर्विस कहाँ से एक्सेस होगा, तो आपको आपकी सर्विस कस्टमर को कहाँ से आसानी से मिल जाएगी, सुविधाजनक मिल जाएगी। वो फिजिकल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है या रिमोट सर्विस हो सकता है। दैट इज एग्जांपल नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon Prime. So we are consuming this content, online content, entertainment content through online, through their application or through their web application. Then physical service, example, if you want to watch the movie or cinema, then you have to go to the theater, that is PVR cinema. Then service provider, then here you have to decide how many staffs or what systems will be required, or how you will going to give that service, whether it may be automated or not. Example, Taj Hotel, and they focus on the trained staff, and there the personal will be required, employee will be required, staff will be there for the interaction with the customer. Then Infosys, they give the remote services. So these are the certain example, food delivery, Zomato, Swiggy,
they use mobile application to deliver their service. E-commerce platform like Amazon, Flipkart, they deliver your product, they deliver your package at your home or office at your address uh, with their online applications. Then transportation company, example railway based best buses, metro rail, they use physical location, they have platform, they have bus station, physical and physical locations they provide, but the ticket booking they give access to the mobile application. Then banking, example ICC Bank, they offer online banking, internet banking, and also they give the place benefit through the physical branches by opening their physical branches. Next, service marketing mix is promotion. So promotion means what? Uh, you need promotion means communicating, trying to create awareness about your services to the customer, so that customer would attract it and they are going to buy your services. So आप communicate कर रहे हैं, आप मैसेज दे रहे हो कस्टमर को कि आपका ये सर्विस है, आपकी सर्विस ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, आपका ये सर्विस ये बेनिफिट आपको देगी, और कस्टमर को आप अवेयर कर रहे हो कि आपका भी सर्विस मार्केट में अवेलेबल है. यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड सो दैट कस्टमर विल गोइंग टू बाय द services. Or there are different ways of promoting. It may be advertising, it may be a personal selling, it may it may be a different ways of promoting your product or services. Then uh, these are the certain examples that company uses the promotions for their services. Example, telecom industry like Reliance Jio, they uses mass advertisements and they offer free trials to the people, and they are trying to attract the services. Then insurance company like LIC use celebrity endorsement and emotional television ads. These are the ways of promotion in the service marketing, like advertising. LIC use advertising, Zomato and Byju's sales promotions. So promoting the sales, increasing the sales, like Geo Fiber or Ola, they give you the discounts, code, cashback, loyalty programs. So they want to increase more number of sales by giving discount, cashback, and loyalty. Personal selling, example HDFC Bank, their representative will call the customer and they will sell the financial product. It may be a loan, it may be a credit card, it may be a personal loan, it may be investments. And same for Policy Bazaar, employee will call and they will sell their product personally. Then digital and social media marketing, this is also one of the way of promoting your product. Example, Paytm promotes through Instagram, YouTube, Twitter. Then sponsorship and partnership, this is also the another way of promoting your services. Example, Reliance Jio, they sponsors many Indian cricket events like IPL cricket match. Then direct marketing, make my trip, they send you the email, they send you the email related to various offer of tourism and offer of various travel packages based and customized packages. Example, Airtel send you the SMS of their different plan. Then experimental marketing like Sher Khan, Zerodha, they organize a webinar, they organize free training where they try to teach you the stock trading, the stock intraday trading, and through that experience of marketing, they try to promote their services. Next, service marketing mix is process. So process is a sequence. It is a systematic sequence of activity that is involved in delivering the service. ऐसी कौन सी एक्टिविटी, ऐसी कौन सी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है, या प्रोसीजर है, या स्टेप्स है जिसके थ्रू आप कस्टमर को सर्विस डिलीवर करेंगे, कस्टमर को सर्विस देंगे. तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी क्या है? क्योंकि हर सर्विस में कुछ ना कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व है. प्रोडक्ट एक बार बन जाता है, उसको आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं बाय पेइंग द प्राइस. लेकिन सर्विस में देयर आर द सर्टेन स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड एंड फॉर गिविंग द पर्टिकुलर service. Example, we'll take the example of e-commerce industry called Flipkart and Amazon. Uh, when you visit the application or website of Flipkart and Amazon for shopping purpose, so what process, what method, what list of activity that a customer need to perform or a businessman need to perform to deliver the service? Example, first you will search, first you will browse and select the particular product on the website and application. Then you will place the order, you will add that particular product to the cart, and then you will make the payment. That may be a payment or online payment or cash on delivery. Then order fulfillment, once the order is placed, then their team will prepare your order for the dispatch for the delivery. Then delivery, next sequence and next step of activity is what? Delivery.
then the package will be delivered to the customer's residence or customer's location or address. And then post delivery, after delivery, if you have any issue like a return, replacement or refund, they will follow and they will complete that particular process. So these are the certain process, these are the certain steps or list of the activity that the service provider has to follow for giving that particular services. Let me give you one more example. Example, hospitality industry. Say for example, Taj Hotel. If you want to book the Taj Hotel for the accommodation for 1 day or 2 day, so what is your first step? That first step that the customer will inquire, customer will call, customer will search the website and website or application for booking. Then booking confirmation will be sent through SMS, through email. Then checking process will be there. You have to check in to that particular hotel. Then stay. Then you have to stay in that particular hotel for that accommodation for that period. You will get the service called housekeeping, dining, and lot many other services are there. And last one is what checkout process. So these are the certain basic process, and the list of activities are there that followed for delivering the services. Next is physical evidence. Now, when we talk about physical evidence, so in the service, service are intangible. No physical thing is given to the customer. So physical evidence is a kind of physical environment that is there at the time of delivering the services. It may be a furniture, it may be a decoration, it may be a sitting arrangement, it may be a washroom. Say for example, when you are going to watch a movie in theater, सो जब आप थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो उनका डेकोरेशन, उनका स्पेस, उनका फ्लोर अरेंजमेंट, उनके सीटिंग अरेंजमेंट्स, लग्जरियस सीट्स, उनके वॉशरूम्स, सो दिस गिव यू द सेंस दैट यू कैन फील दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस विल बी देयर. ये सारे एनवायरनमेंट को देख के आपको एक फीलिंग आती है कि सर्विस किस प्रकार की होगी, सर्विस किस क्वालिटी की होगी. सो आपको एक सेंस आता है ये सारे एक्सटर्नल एविडेंस को देख के, physical environment को देख के, that you feel and you visualize that what type of service will be there, what quality will be there. So जो सर्विस में एक फीचर है intangibility, इसको वो थोड़ा सा मिनिमाइज करता है. That is a physical evidence. दैट इज फिजिकल एविडेंस इंक्लूड एक्सटर्नल सराउंडिंग. वो एक्सटर्नल सराउंडिंग हो सकता है, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो सकता है, वो फर्नीचर हो सकता है, फिक्सचर, एम्बियंस, डेकोर, ड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय एंड स्टाफ. So all these things are the examples when you will visit for a cinema or for a movie. Say for example PVR. So this cleanness, these luxury seats are there, decoration, ambience, lighting, ventilations, selfie points. So this physical environment give you the confidence, give you the level of satisfaction that you are paying certain price for the service. Same for hospitality. Say for if you're booking a hotel for accommodation, so that elegant design rooms are there. Say for example Taj Hotel, well designed rooms will be there, attractive room. So that give you the sense of feeling, that give you the sense of satisfaction. Then seating arrangement, tables, lighting, clean, decorations. So these are the few examples to understand this physical evidence. In the airline, offer the clean aircraft, branded board passing, the quality board passes, then uniform staff, then bank. The next service marketing mix is people. People means what? People means all those individuals, all those employees, all those staffs which are involved in delivering the services. That is people. And people means employee or staff. They face the customer, they interact the customer, they communicate the customer while giving the services. So when there is a customer, when there is a employee will be there, when staff will be there for giving the services, the customer feel very happy, customer feels satisfied, and he will have that particular brand image in the minds of the customer. The people may be of frontline staff or backend staff or third party. Example, in the healthcare, say for if you are going to take the healthcare services in Apollo or Fortis hospital, अगर आप अपोलो और फोर्टिस हॉस्पिटल में आप हेल्थ केयर की सर्विस लेते हैं तो वहाँ पे पीपल कौन हो सकता है? डॉक्टर, नर्सेस, सपोर्ट स्टाफ. देन रेस्टोरेंट, अगर आप खाना खाने के लिए जाते हैं देन वहाँ पे वेटर, मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ, दैट पर्टिकुलर शेफ विल बी देयर, दैट वॉचमैन विल बी देयर. देन टेलीकॉम इंडस्ट्री में कस्टमर केयर टीम, सेल्स स्टाफ इन द स्टोर. In retail, say for DMart or Reliance Fresh, the store employee, the cashier, the storekeeper, the customer care. So these all are the people which is required to give the value service, to give the service, to deliver the service to the customers. Next, next we will try to understand this all service marketing mix in all together by with one example.
We will see the Ola cab as a case study for understanding this service marketing mix, all 7 P's. Example first, अब ओला कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? देयर मेन प्रोडक्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड दे गिव द सर्विसेज ऑफ वेरियस ऑप्शन लाइक ओला मिनी, प्राइम, ऑटो, rental. Then the price, the next element is price. They are charging the dynamic price depending upon the situation, depending upon the time, peak time, and they are trying to give the budget or affordable price. Then place, they are targeting the nationwide availability, accessible via mobile, intercity transportations are services are given by the Ola company. Then promotions, they are trying to advertise their services through giving discount, referral program. They are having the partnership and sponsorship program, and through that they are advertising their promoting their particular services. Then people will be required. People are there to give the services of Ola cab. The people will be the driver, the customer care to give you the convenience and safety. Then the process, what will be the process? If you want to take the Ola cab services, first the process is that you are going to book that particular cab by online application. Then there will be a tracking system, real-time tracking, and then the payment process. And the last, physical evidence. So what will be the physical evidence or physical environment? That particular new branded car, that driver's uniform, that particular application, or that particular receipt you will get when you pay the price. So these all are the 7 P's of marketing mix, service marketing mix. We have seen all together by one case study called Ola Cab. So I hope I have made and I have tried to make you understand about the service marketing mix. So if you like this particular video, kindly like, subscribe the channel, because the knowledge meets understanding. Till then, take much care of yourself. आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए. Thank you.